ग्रेविटेशन रिवीजन कर लेते हैं बेटा जल्दी से। चलिए फर्स्ट वन इज Newton's laws of gravitation. First one is Newton's law of gravitation. याद है बेटा? जल्दी से बताइए. Force is directly proportional to product of the masses and inversely proportional to the square of the distance. Removing the proportionality constant, we get a constant known as of your g. So F is equals to g into m1 m2 divided by r square. m1 m2 are the masses of the body, g is your gravitational constant and r is the distance between your m1 and m2. And g की वैल्यू क्या होती है बेटा? g वैल्यू is equals to, याद है किसी को? 6.67 into 10 to the power of minus 11 Newton meter square per kg square. ठीक है? चलो, very good. Next one. Variation of gravity. Variation of gravity. Okay. इसके अंदर पहले वाला at surface of earth. At surface of earth. बताइए बेटा फॉर्मूला. G is equals to your capital G, capital M divided by your R square. ठीक है? Number 2. Above surface of earth. Above surface of earth. याद है किसी को? G at a certain height will be equal to your G into your R by R plus H whole square. Okay? Is it clear? For small heights, G at your H is equals to G into 1 minus 2H divided by R. Okay? The same way. Number 3. Below surface of earth. Below surface of earth. For the below surface of the earth, G at a certain depth will be equal to your G into 1 minus of your depth divided by your radius. Okay? And number 4th one. Axial rotation. Due to your axial rotation of earth. ये पूरा मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, बस आपके रिवीजन के लिए एक बार आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ. G due to the rotation is equals to your G minus of your एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है बेटा G into 1 minus 2 into R omega square into cos square phi divided by your G to the power of 1 by 2. Isn't it? R इसका अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं. G at स्मॉल एंगल्स के लिए हो जाएगा G minus of your R into your omega square into your cos square phi. Okay? The next one. Third one. Gravitational field. Gravitational field strength.
Gravitational field strength represented by your E, और कभी कभी G bar से भी represent कर लेते हैं बेटा, isn't it? So gravitational field number A due to point mass, ड्यू टू पॉइंट मास, क्या फॉर्मूला है बेटा, याद है किसी को? E is equals to your capital G capital M divided by your R square. Okay, due to point mass अगर लिख रहे हैं, due to your point mass, E is equals to capital G capital M divided by your R square. E is equals to capital G capital M divided by your R square. Okay, the same way. Number B. Gravitational field due to uniform solid sphere of radius R. Field due to uniform solid sphere of radius capital R. We're talking about gravitational field due to a uniform solid sphere of radius capital R. Okay, in this one, number 1, when small r is greater than or equal to capital R, so E as a function of R will be equal to capital G capital M divided by R square. And number 2, when small r is lesser than capital R, inside, gravitational field as a function of R inside will be equal to capital G capital M into small r divided by your capital R cube. Very, very, very important formula. Okay. This one is very important. Okay, very good. Okay. So we got gravitational field due to the field strength. The field strength, number A is due to the point mass, number B is due to the field of a uniform solid sphere of radius R, and number C, if I am going in this one, field due to uniform spherical shell. Field due to uniform spherical shell. Okay. In this also we are having two cases beta. Number 1, small r greater than or equal to capital R. Gravitational field as a function of R will be equal to capital G capital M divided by R square. And number 2, when small r is lesser than of your capital R, E as a function of your R will be equal to capital G capital M divided by your R, isn't it? Sorry, this one will be equal to, for this spherical shell we am writing now. For the spherical shell if I am writing, R is right now greater than or equal to R. So gravitational field as a function of R, anywhere it will be the same. What is the formula? Capital G capital M divided by your capital R square. Now if I am talking for the next one, small r lesser than capital R, anywhere inside will be equal to your 0. Anywhere inside will be equal to your 0. Clear? Very good. Next one. Number D. Gravitational field due to a uniform circular ring of radius capital R on its axis. So gravitational field on its axis will be equal to capital G capital M into your small r divided by your capital R square plus small r square to the power of your 3/2. And it will be maximum at what position beta? ER is maximum at small r is equals to capital R divided by root. This is a very important point. Clear?
So in this one, the 4 points we need to remember: due to the point charge, due to point mass, due to uniform solid sphere, gravitational field due to your uniform spherical shell. The next one is gravitational field due to a uniform circular ring of radius capital R on its axis. Kepler is the radius of your ring ना बेटा, भूल गए? ये अपना रिंग अगर है, ये इसका एक्सेस होगा, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर, ठीक है? इज इट क्लियर? और ये हो गया स्मॉल आर, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है? आप एक्स भी लिख सकते हो बेटा, आर की जगह एक्स भी लिख सकते हो, जीएम इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो। और ये मैक्सिमा कहाँ पर बनता है? कैपिटल आर बाई और रूट 2 के जगह, ठीक है ना? और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बनता है अंडर रूट ऑफ योर आर स्क्वायर प्लस ऑफ योर स्मॉल आर, ठीक है? हाँ, स्पेरिकल शेल और हैलो सिलेंडर, सिलेंडर अलग होता है ना बेटा। चलो, so this one about 4 points we need to remember. और 4th point देख लीजिए, gravitational potential. Gravitational potential फॉर्मूला याद है बेटा? ग्रेविटेशन पोटेंशियल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? कैपिटल वी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बेटा, तो साइन कन्वेंशन होना जरूरी 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 है इसके लिए। देखो फर्स्ट वन लिख रहा हूं मैं इसके लिए, पोटेंशियल, हाँ बोलो बेटा। हाँ, potential due to point mass. First one is potential due to your point mass. फॉर्मूला बताइए, V is equals to your capital G capital M divided by R followed by minus sign. Okay. Number 2, potential due to the solid sphere. Potential due to a uniform solid sphere of radius capital R, of radius capital R, ठीक है ना? इसके अंदर दो केसेस होंगे बेटा। नंबर ए, when small r is greater than or equal to capital R, इसके लिए potential will be equal to minus of capital G capital M divided by small r. Number B, when small r is lesser than capital R, gravitational potential as a function of your R will be equal to minus capital G capital M divided by 2 into your R cube into 3 times of R square minus of your small r square. ठीक है? The next one, number 3. Gravitational potential due to uniform thin spherical shell, ठीक है? तो इसके अंदर भी दो केसेस है बेटा। देखिए नंबर 1, when small r is greater than or equal to capital R, then potential as a function of R will be equal to minus of capital G capital M divided by your R. Number B, when small r is lesser than R, so potential due to the uniform spherical shell is constant but at any point inside the shell, and it is always be equal to how much beta? V anywhere inside will be equal to your minus of capital G capital M divided by your capital R. Isn't it? It is constant at any point inside the shell. Constant at any point inside the shell, यानी सेंटर से लेके सरफेस तक पूरा सभी सेम रहेगा बेसिकली, ठीक है ना? 4th पॉइंट,
Potential due to the uniform ring. Gravitational potential due to a uniform ring. Due to a uniform ring of radius capital R. Radius capital R at some point on its axis. At some point on its axis. इसके लिए देखो potential as a function of R will be equal to minus capital G capital M divided by under root of your capital R square plus small r square. 0 lesser than or equal to R lesser than or equal to your infinity के लिए applicable हो. Clear है? Due to uniform ring यानी ये मेरा ring है, ये यहाँ से यहाँ तक distance है small r और ये हो गया capital R. तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस बन गया मेरे को अंडर रूट ऑफ योर आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर. ठीक है ना. चलो, सो दैट वाज अबाउट योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम लोग बात कर रहे थे. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट मास. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कितना बेटा कैपिटल आर. उसी तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल शेल. ये पूरे ऐसे फॉर्मूले से जो अपने को हर वक्त याद रहना है बेटा. देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्म रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर एट सम पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस. क्लियर है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑल्सो वर्क डन पर योर यूनिट मास. V को हम लोग वैसा भी लिख सकते हैं. Gravitational potential is also equal to यहाँ पर लिखना होगा V is also equal to your work done divided by your mass. ये भी हो सकता है. Gravitational potential यूनिट क्या हो जाएगा बेटा जॉल पर केजी. जॉल पर केजी. ठीक है. Is it clear? चलो next one. Point number 5. The relation between gravitational field and potential. Gravitational field and potential. Potential scalar quantity होता है बेटा. तो हम लोग लिखते हैं E is equals to gravitational potential. E is equals to your minus of your dou V divided by dou R. E is equals to your minus of your dou V divided by dou R. R is your position vector and V is your potential vector. ठीक है. X axis के लिए तो X axis लिख लीजिए. Y axis के लिए वो तो Y axis. देखिए gravitational field along X axis लिख रहा हूँ. So this will be equal to minus of dou V divided by dou X. Gravitational field along y axis लिख रहा हूँ. E is equals to minus of dou V divided by your dou Y. Dou V divided by your dou Y. Then उसी तरह से gravitational field along Z axis is equals to minus of dou V divided by your dou Z. Done बेटा. For X axis, for Y axis and for your Z axis. Then next one is gravitational potential energy. 6th point देख लीजिए. Gravitational potential energy. Gravitational gravitational potential energy. Number 1. For two particle system. For two particle system,
potential energy is equals to minus of your G M1 M2 divided by your R. So U is equals to your minus of your G M1 M2 divided by your R. For many number of particles, you just add them better. For n particles, so U will be equal to your U1 plus U2 plus U3 plus so on. Done better? Next one. Next one. Difference in potential energy. ये important है बेटा. Difference in potential energy. याद है कुछ फॉर्मलेस? वेरी फेमस फॉर्मलेस होता है बेटा इसको. मान के चलो ये अपना अर्थ है, ये इसका रेडियस कैपिटल आर, ये हो गया इसका मास कैपिटल एम. यहाँ पर एक पार्टिकल ले रहा हूँ ये, एंड ऑन द ग्राउंड आई एम टेकिंग अनदर पार्टिकल ऑफ योर बी. इसका मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर, और इसका हाइट हो गया मान के चलो h. Okay, so potential energy at the surface of the earth will be equal to minus of capital G capital small m divided by r. ये पार्टिकल का मास कितना है मेरे पास ये. Potential energy at your A will be equal to your minus of capital G capital M small m divided by your r plus of your h. तो अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा तो डेल्टा U is equals to your UA minus of UB. अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो विल बी गेटिंग एज mg into your h divided by 1 plus h by your capital R. Very famous formula. Delta U is equals to your mg into your h divided by your 1 plus h by R. अगर h बहुत छोटा है, for h much lesser than capital R, change in potential energy is almost all equal to mg into your h. ठीक है बेटा. इसके बाद और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी किसको बोलते हैं बेटा? नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ योर टोटल एनर्जी. दैट इज योर नेगेटिव ऑफ योर काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी. Isn't it? तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इसका बाइंडिंग एनर्जी के लिए? दिस इज माइनस ऑफ योर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. दैट विल बी इक्वल टू 0 माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय योर कैपिटल R. तो बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ योर टोटल एनर्जी, that is your capital G capital M small m divided by your capital R. So this will be your binding energy का formula. Negative of total energy. Very important beta. Done. So next one. Next one is escape velocity. Next one is escape velocity represented by V. फॉर्मूला तो याद होगा आप लोगों को. escape velocity is under root of your 2g into capital R. या इसको हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं? under root of your 2 times of your capital G capital M divided by capital R. Okay. For Earth escape velocity कितनी होती है बेटा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है. Next one, motion of satellites. Motion of satellites. Almost all पूरे के पूरे formulas of gravitation मैंने रिवाइज कर लिया बेटा, without leaving any of the formulas. 90% पूरे formulas हम लोग ने कवर किए which have been required for doing the numericals.
इतना बेसिक नॉलेज अपने पास होना चाहिए फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल्स पार्टिकुलेशन। तो इसके अंदर हम लोग फर्स्ट बात करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में। सो ऑर्बिटल स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय योर v नॉट। फॉर्मूला याद है बेटा? What is an orbital speed? The speed with which any satellite is revolving around the Earth in a circular orbit is called as of your orbital speed. Orbital speed का formula under root of your capital G capital M divided by R. Small r is capital R plus small r is your capital R plus h beta. ठीक है? This is also equal to under root of G into capital R. R, this is also equal to your escape velocity divided by root. For Earth, orbital velocity की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी अप्रोक्सीमेटली अपन ले सकते हैं 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट वन, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। टाइम टेकन फॉर द कंप्लीट रेवोल्यूशन बेटा, फॉर्मूला याद है? T is equals to 2 pi under root of your r cube divided by your capital G divided by capital M. इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2 pi under root of your r cube divided by G into capital R square. ठीक है ना? हाँ, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब के प्लस थर्ड लॉ बन जाएगा अपने। इसमें थर्ड पॉइंट देखिए बेटा, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट्स। Energy of satellite is given by the formula E is equals to minus of capital G capital M small m divided by 2 times of your R. E is equals to your minus of your capital G capital M small m divided by 2R. हाँ, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना था देखो बेटा, माइनस ऑफ योर कैपिटल जी कैपिटल एम माइनस ऑफ कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ पर भी अपन माइनस ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय r कैन बी रिटन एज u इज इक्वल्स टू योर u by 2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, देन लास्ट पार्ट ऑफ दिस वन, Kepler's laws of planetary motion। याद है ना सभी को? फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज Kepler's first law is also known as what बेटा? Law of orbits। ठीक है नहीं? फर्स्ट वन इज नोन एज ऑफ योर law of orbits। law of orbits बोलो या Kepler's first law। Kepler's first law, law of orbits और Kepler's first law। ये क्या बोलता है बेटा, याद है किसी को? Each planet revolves around the sun in an every planet revolves around the sun in an elliptical orbit with sun at your one of your focus। लिखने की जरूरत नहीं है ना? Second law is also called as law of areas and it is based upon the law of conservation of angular momentum। So radius vector क्या बोलता है बेटा? Every planet sweeps the equal areas in the equal intervals of your time, that is your Kepler's second law। एक बार मैं लिख देता हूं, each planet revolve around the sun in
elliptical orbit with sun at one focus. With sun at one focus. Number 2. Second law or law of areas भी बोलते हैं इसको. Law of your areas भी बोलते हैं. ये क्या बोलता है? But actually it says that every planet sweeps equal areas in equal intervals of the time. Okay, so I can say that radius vector drawn from the sun to a planet sweeps out equal area in equal intervals of time. Equal intervals of time. Or I can say that second law is actually the law of conservation of angular momentum. It is actually law of conservation of angular momentum. इसका मैंने डिटेल क्लास में पढ़ाया था, एक बार टाइम निकाल के थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अस. ठीक है, और लास्ट पॉइंट इसके अंदर, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स को पूछ जाएंगे. दैट इज थर्ड लॉ और लॉ ऑफ पीरियड्स भी बोलते हैं इसको. लॉ ऑफ योर पीरियड्स. ये क्या बोलते हैं बेटा, याद है किसी को? द स्क्वायर ऑफ द प्लैनेट ऑफ ए टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस. डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर आर क्यूब. आर इज नथिंग बट व्हाट? सेमी मेजर एक्सिस, एलिप्स का. ठीक है, so that is about your Newton's third law. Sorry, तो Kepler's third law. क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? Any doubt in this one to anyone? चलो, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं अपन. Two identical point masses of M. Two identical point masses of M. Two identical point masses of mass M, both are released from rest such that initial separation between them is small d. The speed of any mass when the separation between them becomes d by 2 is. Very good question. I'm giving you the options also. Try to do it. It is under root of your 2 times of your capital G into your M divided by D. Second one is under root of your G into your M divided by D. And third one is under root of your G into your M divided by 2D. And fourth one is under root of your 3 into G into your M divided by your D. चलो करके बताइए.
two identical point masses of mass m, both are being released from your rest such that the initial separation between them is d. तो यहाँ पर एक पार्टिकल है और यहाँ पर एक पार्टिकल है, दोनों के मासेस m है और दोनों के बीच की दूरी d है, ठीक है ना। अब उसके बाद उसने क्या बोला, द स्पीड ऑफ एनी पार्टिकल्स व्हेन सेपरेशन बिटवीन देम, यानी d का ये देखो ये सामने आ जा रहे हैं, ये यहाँ पर आ गया और ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया, सच दैट इन दोनों की डिस्टेंस जो है ना d/2 हो गई, ये m है ये m। So you can apply the law of conservation of energy principle बेटा, applying law of conservation of energy. Energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one point to another point. And its initial energy plus initial kinetic energy must be equal to final potential energy plus final kinetic energy. Initial potential energy कितना हो जाएगा बेटा, capital G into your m into your m square divided by initial distance between them is d. Initially दोनों के पास kinetic energy नहीं है तो 0, that is equals to minus g into your m into m square divided by, अब distance कितना हो गया d/2, ये हो गया प्लस 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दोनों के पास वेलोसिटीज आ जाएगी तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 into m into v square, ठीक है ना। तो ये बन गया मेरे पास माइनस ऑफ g into your m square divided by d is equals to minus of g into your m square into your 2 divided by your small d plus this will be equal to a2 और a2 से मल्टीप्लाई कर लो तो this will become for me m into your v square, a2 और a2 चले गए, हो गया ना बेटा। तो m into v square है, ये इधर आ जाएगा तो ये कितना बन जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 2m में से एक निकाल दो, so that will be equal to how much for me, m into v square will be equal to your capital G into your m square divided by your d हो जाएगा, 2 में से 1 निकाल रहे हैं ना बेटा, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर देखिए, am और a स्क्वायर चले गया तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू g into m डिवाइडेड बाई d आ गया, यानी v की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ योर g into your m divided by small d, so this will be the velocity. Clear है, is that clear? Clear? चलो और एक क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, द वर्क डन to raise a mass m slowly from the surface of earth, to a height from surface to a height equal to twice the radius of earth, twice the radius of the earth is. Options are mg into re divided by 3, second option is mg into re divided by 2, third option is 2/3 mg into radius of the earth, fourth option is mg into radius of the earth. चलो करके बताइए जल्दी से। The work done to raise, तो डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला लिखाया था इसके लिए, वर्क डन क्या होता है बेटा, वर्क डन is nothing but change in potential energy,
change in potential energy. Yani that will be equal to your how much work? mg into your h divided by 1 plus h by radius of the earth. So that will be equal to your mg into your h is equals to how much beta? Twice, yani 2 times of the radius of the earth divided by 1 plus 2 times of the radius of the earth divided by radius of the earth. Radius of earth will get cancelled. So 2mg into radius of the earth divided by 3. So it is 2 by 3 times of this one. Clear hai? Chalo, very good. इस पे कल और थोड़े प्रॉब्लम्स कर लेंगे रिवीजन के हिसाब से। तो जब तक आप लोग एक बार ग्रेविटेशन के नोट्स निकाल के रिवाइज कर लीजिए, थोड़े अच्छे वाले कॉन्सेप्ट के लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी पे थोड़े प्रॉब्लम्स वगैरह कर लीजिए। ऑलरेडी मैंने क्लास में कराया, तो एक बार गो थ्रू कर लीजिए। वैसे भी मैंने मैक्सिमम पूरे का पूरा रिविजन करा दिया, शायद एक दो कॉन्सेप्ट इधर उधर हो गए होंगे। स्टिल आप लोग क्लास की नोट्स निकाल के एक बार देख लीजिए, तो पूरा ग्रेविटेशन का आराम से एक अच्छा खासा रिविजन हो गया। ठीक है ना? एग्जाम कैसा लिखे कोई बोले ही नहीं मेरे को। देखो काइनेटिक एनर्जी मैंने 2 टाइम्स क्यों लिया, लेकिन क्योंकि 2 पार्टिकल्स है ना बेटा, तो दोनों को काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था? हाफ mv² प्लस हाफ mv²। तो ये 2 टाइम्स हो गया, इसलिए मैंने 2 टाइम्स लिख दिया वहां पर सीधा। ठीक है ना? ओके चलो, इसका मैं आपको पीडीएफ भेज देता हूँ। रिकॉर्डिंग भी, आप रिकॉर्डिंग में देख ले सकते हो। ठीक है, जज़ाकल्लाह, टेक केयर, बाय।